step. Okay, and then we'll be discussing about the other parts, that is RAM, rectangular, triangle, and so on. We are done with operation and signal. Fine. This is purely remaining. Fine. Operation signal, यहां पर आ जाते हैं हम लोग. Shifting, scaling, time reversal, addition, multiplication, this thing we have done. Then we'll be left only with convolution correlation. This is what we have done so far. Okay. So probably by next week, Friday, we'll be able to complete with this module of module number 1. थोड़ा लेंदी मॉड्यूल है, टाइम लगता है चीजें खत्म करने के लिए. Okay, and then the once this thing is done, then the things will progress at a very fast pace. Then we will increase the speed, because पहला मॉड्यूल है, चीजें समझना जरूरी था, इसलिए हम धीरे धीरे चीजों के इसमें हम जाने थोड़े चले गए हम लोग. But anyways, no worries sir, let's start with the topic. So now let's try to understand like what we are supposed to start with. So guys, we were dealing with elementary signal. Why do you require elementary signal? Can you unmute your microphone and tell me, sir, why do I require elementary signal? To derive a complex function. Why do you require? Exactly, obviously, to derive the complex signal. The first foremost that we have seen was unit impulse. सबसे पहले जो सिग्नल हम लोगों ने देखा, यूनिट इम्पल्स, इसको मैं टिचकी बोलता हूं, एक टप्पू मारने वाला हूं मैं. ओनली एट टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 दैट सिग्नल इज अवेलेबल, दैट इज द वैल्यू इक्वल टू 1. दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट इम्पल्स. Second that we have seen was unit step. Second that we have seen was unit step, also known as u of t. What is the, how does it look like? This signal is 1 for everywhere t greater than 0, and the value will be 0 for all t less than 0. And in order to clear the ambiguity at the point of discontinuity, we say t equal to 0, the value is 0.5, and this is what we call it as Gibbs phenomenon. What we call it as Gibbs phenomenon. Fine. We have also seen the real-time application. Unit impulse is used to find the impulse response, transient response, force-free response, system response, natural response of a system. If I talk about step, so step is available at all the instant of time. At all instances, it is available for t greater than 0. So I can say step will give you the forced response of a system. Is it clear to you, sir? Have you understood what is the difference between a transient response and a forced response? Any query in this, you can ask me. Transient response and forced response. Have you understood, sir? Simple story आपको बताता हूं मैं. Yes. Simple story. Example, COVID-19 आ गया. कभी आ गया ये? 20 मार्च 2022. सॉरी 2020. ओके, 20 मार्च 2020. ये जब आया, वो टाइम पे जो लोग थे, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी. आदमी मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. पहिला स्टुडंट क्या बोला, अरे किती त्रास आहे, कसा पॉसिबल आहे, स्क्रीन टाइम किती वाढणार, कसा लेक्चर अटेंड करायचा, कशाला उगाच घरी बसायचा, बाहेर पडू नाही शकत, डिफिकल्ट. कब तक बोला उसने 6 महीने तक ऐसे ही बोला. 6 महीने तक. ये बच्चे ने क्या किया, इसने भी बोला डिफिकल्ट है, नहीं तसा नहीं ते नहीं. उसने 4 महीने तक बोला. इसने 2 महीने तक बोला. अल्टीमेटली एक साल गुजर गया, 2021 आ गया. 2021 में ये भी लेक्चर अटेंड कर रहा है, ये भी लेक्चर अटेंड कर रहा है, ये भी लेक्चर अटेंड कर रहा है. क्यों? बिकॉज कोविड वॉज कंटिन्यूइंग. द इनपुट अप्लाइड वॉज कंटिन्यूअसली अप्लाइड. सिस्टम गॉट अडॉप्टेड, सिस्टम गॉट कॉम्पेटिबल, सिस्टम गेट हैबिचुएटेड. compatibility आ गया सिस्टम का with the input applied. Understand what I'm trying to say, sir? That what we call it as forced response. ट्रांजिएंट में क्या होता है, ट्रांजिएंट में आप इनपुट देते हो, सिस्टम जो वो 3 सिस्टम हम लोगों ने देखा था. एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने कहा था कि अगर मेरे पास में 3 सिस्टम है, 3 लोग हैं यहाँ पे, इसका नाम है टॉम. डू यू नो द स्टोरी सर ऑफ टॉम डिक हैरी? डू यू नो द स्टोरी ऑफ दिस? इसने इसको आपने टप्पू मारा, इसकी तो क्या बोले इसने, आपने भाई क्यों मारा है, मत मार यार. आपने जो इसको टप्पू मारा था, इसने आपको गाली दे दिया, एमसीबीसी बोल दिया. जब आपने इसको टप्पू मारा था, इसने क्या बोला, इसने आपको उठा के पंच मार दिया. ये क्या था सर? ये सिस्टम का खुद का नेचुरल रिस्पॉन्स था. ये सिस्टम की खुद की फितरत थी. ये सिस्टम का खुद का बिहेवियर था. हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन इनपुट.
अगर आप इनपुट कंटिन्यू देके रखते हो तो ये भी रेजिस्ट कर रहा है, ये भी रेजिस्ट कर, लेकिन कुछ देर के बाद में सिस्टम जो हैबिचुएट हो जाता है. Fine, that what we call it as a forced response. So you should know कि for example if I say कि I have three type of system. System number one, मतलब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे exactly 5 एम्पियर चाहिए. I want to get 5 ampere. System number one is giving you such kind of response. System number two is giving you such kind of response. System number three is giving you such kind of response. Which system you like, sir? Which system do you like? Did you like the most? The green colored, the red color, or the pink color? Tell me, sir. कौन सिस्टम आपको अच्छा लगा? Green color. Why green color, sir? Why green color? So desired. Because in case of green color, the output that you attain 5 ampere is very fast. 5 एम्पियर फटक से अचीव किया उसने. What about this? This system is very sluggish. This system is very slow. In order to attain 5 ampere, see how much time it has taken. It has taken very long amount of time. तो मैं कहूंगा ये वो आदमी है जो यहाँ पर इस आपको पंच मारा था. मतलब ये आपको बहुत रेजिस्ट करने वाला है. ये आदमी वो है जो रेजिस्ट करेगा. ये आदमी वो जो ब्लॉक करेगा. नहीं कसा का शक्य आहे, किती डिफिकल्ट आहे, नाही मी अजिबात करणार. दिस पर्सन इज वेरी रिजिड इन नेचर. तो ये आदमी परिवर्तन, ये आदमी चेंज पे ज्यादा आपको ये नहीं करेगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दिस सिस्टम इज नॉट गुड. दिस इज अ वेरी बैड सिस्टम. व्हाट इज अ गुड सिस्टम? द ग्रीन कलर इज अ गुड सिस्टम, बिकॉज ये सिस्टम का ट्रांजिएंट टाइम जो ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स है बहुत कम है. इसका सिस्टम ट्रांजिएंट बहुत कम है. तो आई कैन से द सिस्टम वाज हैविंग वेरी लेस ट्रांजिएंट और कंसीडर टू बी द गुड सिस्टम. Okay, then how to get transient? Transient will be given only by means of unit impulse. क्या आपको स्टेप कभी ट्रांजिएंट देगा? नहीं, स्टेप आपको फोर्स रिस्पॉन्स देगा. बिकॉज आपने जब इनपुट कंटिन्यू देके रखा है तो कुछ देर के बाद में, लाइक अगर यहाँ पे आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 आवर आपको ये भी 5 एम्पियर दे रहा है, आपको रेड वाला 5 एम्पियर दे रहा है, ये भी आपको 5 एम्पियर. ऑल विल बी गोइंग टू गिव यू 5 एम्पियर. बट एट इन ऑर्डर टू गेट इट 5 एम्पियर आपको कितना किसने थकाया वो इंपॉर्टेंट है. that this person has given you more amount of struggle. या इसने आपको बहुत परेशान किया अपने को 5 एम्पियर आने के लिए. That what is the meaning of transient. I hope the things are clear towards the meaning of transient force response. Okay, now तो ये चीज हमको पता चला पे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फोर्स रिस्पॉन्स के लिए मैं इंपल्स स्टेप लेने वाला हूं. नाउ थर्ड दैट वी आर गोइंग टू डील विद इज कॉल्ड एज द यूनिट रैंप फंक्शन. यूनिट रैंप फंक्शन सिलेबस के अंदर यू डोंट हैव ट्रांजिएंट, यू डोंट हैव फोर्स. क्यों सिखाया सर? बिकॉज जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तब आपको ये पूरा समझने वाला है कि भाई ट्रांजिएंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, क्यों इसका एप्लीकेशन होने वाला है. ये पूरा टेबल आपको देखने मिलेगा कंट्रोल सिस्टम के अंदर. इंपल्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, द कंप्लीट टेबल विल बी अगेन इन क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन आई डील विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स इन कंट्रोल सिस्टम. इज इट क्लियर टू यू सर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट रैंप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट रैंप फंक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट रैंप? भाई यूनिट रैंप क्या होता है अब ये समझते हैं हम लोग. What is the meaning of unit ramp? In order to understand unit ramp, let's come over here first. Let's try to understand this. क्या रैम्प क्या होता है? रैम्प जो होता है वो कुछ इस तरीके से लिखने वाला है. रैम्प फंक्शन का डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में. I'll come to unit ramp. तो रैम्प का अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट I'll draw the skeleton. This is my x-axis. Fine. I call it as time t because we are dealing with continuous time. Fine. I call this as at present as y of t. I call this at present y of t. अब ये मत बोलिए सर यहाँ पे तो डेल्टा लिखा, यहाँ पे यू लिखा, रैम के लिए y बाद में आते हैं हम लोग. फिलहाल समझिए कि वो सिग्नल है y of t. And this signal is available like this. इसका मतलब क्या हो गया कि जब 0 है तो ये 0 है, जब ये 1 है तो ये 1 है, जब ये 2 है तो ये 2 है, जब ये 3 है तो 3 एंड सो ऑन. फाइन. एंड सिमिलरली लाइक दिस वे. नाउ अब मैं बोलता हूं कि ये जो सिग्नल है जो मैंने बनाया है इसका जो स्लोप है, वो इक्वल टू m है. व्हाट इज m सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप m? तो आई से m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. पढ़ा होगा आपने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर. स्लोप का मतलब ये होता है. ऑल्सो स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा. ऑल्सो स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं थीटा इक्वल टू 0, इफ अगर मैं कहता हूं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 तो यू गेट दिस लाइन बराबर. tan 0 is 0. इफ आई से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाय 2 आई से थीटा इज समथिंग ऑफ दिस काइंड.
बराबर है सर, दिस मीनिंग ऑफ स्लोप। तो स्लोप विल हेल्प यू टू से कि आपका जो लाइन है वो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसा खड़ा होगा या ऐसा होगा। अगर समझो, अगर मैं कहता हूं ऐसा, दिस मीन द स्लोप इज नेगेटिव इन नेचर। इफ फॉर एग्जांपल इफ ड्रॉ लाइन लाइक दिस, आई से दिस हैविंग अ स्लोप ऑफ नेगेटिव इन नेचर, फाइन। So now this is the meaning of slope m. So I hope you understand what's the meaning of slope in that case. Okay, fine. चलो यहां तक समझ गए हमको what's the meaning of ramp. Now, in order to understand this, what's the meaning of y of t? So I can say basically y of t is equal to m into t. ये बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, y is equal to cx बोलकर. Do you remember? Sorry, y equal to mx, y is equal to mx. Do you remember the expression y equal to mx? We have studied in straight lines. Yes. If okay, fine, that we have seen over there. This is same thing मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने y is y, m is m, and x is here t in this case, because x यहाँ पे मैंने x के जगह मैंने t y equal to m into t. Now just concentrate over here, just focus over here. अब मैं क्या करने वाला? Now what I'm going to do, if m equal to 1, मतलब what is m equal to 1? अरे भाई slope equal to 1. If slope is equal to 1, then obviously y of t will be equal to t, क्योंकि आपने m कर दिया. So this is a special case. This is a special case wherein m is 1. This is a special case where m in 1, and this special case is known as unit ramp. This special case is known as unit ramp. Why unit ramp, sir? Because यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अपने रैम्प को m1 कर दिया, अपने स्लोप 1 कर दिया. अगर स्लोप 1 नहीं होता तो आप रैम्प बोलते, स्लोप 1 है करके आपने से क्या बोला, यूनिट रैम्प. ओके, नाउ अब ये रैम्प जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी है. I want ramp only in the first quadrant. What should I do? I want ramp only in first quadrant, not in third quadrant. क्या करना पड़ेगा? ये कल पढ़ाया था आप लोगों को मैंने, एप्लीकेशन यूनिट स्टेप. टेल मी सर. Multiply by ut. हाँ, क्या बोला सर? फिर से बोलिए सर, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? Step function. हाँ, मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t, मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t. तो अभी ये जो फंक्शन जो बन गया स्पेशल फंक्शन, जहां पे आपने t को u ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पे आपने t को u ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट यू कैन से कि नाउ आई एम हैविंग ओनली वन साइडेड सिग्नल. अभी पहले बहुत साइडेड में था, फर्स्ट में भी था, थर्ड में भी था, ये हो गया. अब ये जो फंक्शन जो बन गया, इसको मैं भी नया नाम दूंगा, u ऑफ t के जगह पे, y ऑफ t के जगह पे इसको बोलूंगा r ऑफ t, वेर इन r ऑफ t is your t times u of t. Kindly make a note of this. This is what we know as unit ramp function. The unit ramp function is that function wherein there are two attributes. Attribute number 1, that function is having slope m equal to 1. Second attribute, that slope is only available in first quadrant. This is known as r of t. Is it clear to you, sir? What is r of t? Any question over here? Come over here. Page number 26. Page number 26. Ramp signal t, y of t, slope is m, y of t equal to mt. This line exists in first and second, third quadrant. To keep line first quadrant, multiply by u of t, as you have rightly told beta. So y of t is equal to m dot t u of t, है ना? M dot t u of t, and this t u of t will be call it as r of t. This t u of t, ये पूरे जो फंक्शन था यहाँ पे t u of t जो था यहाँ पे, ये t u of t को मैंने क्या बोल दिया सर? ये पूरे t of u t को मैंने बोल दिया r of t. Fine. Now if I make m equal to 1, then what will be having, sir? My slope equal to 1. So if slope equal to 1, then I call this as a unit ramp function. मतलब ये 1 हो गया सर, ये m equal to 1 हो गया, तो 1 का मतलब होता है यूनिट, और यहां हो गया रैम्प, तो इट इज नोन एज यूनिट रैम्प फंक्शन. समझा सर पूरा स्टोरी? यहां देखिए सर, नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. यूनिट रैम्प denoted by letter r of t. This is a ramp function like this, with slope equal to 1, only existing in the first quadrant. Unit ramp right in front of you. Unit ramp. Why it is known as unit ramp? वाइवा में क्वेश्चन कभी कभी आता है, यूनिट रैम्प क्या होता है? तो यूनिट रैम्प वो होता है जिसका स्लोप 1 होगा, पहला एट्रीब्यूट. दूसरा एट्रीब्यूट क्या होगा? द रैम्प फंक्शन इज ओनली अवेलेबल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट only. It is only available in the first quadrant.
unit ramp function is completed. Theta equal to 0, theta is 90, then you get infinity, such kind of thing. Fine. Now dealing with operation on ramp signal. Sir, can you tell me what will be the answer for r of t minus 2? R of t minus 2 क्या होगा? R of t minus 2. Yes. डिले Operation. होगा by 2. Exactly. मतलब अगर समझो मेरे पास में सिग्नल है, suppose this is my signal, and if this is my r of t, if this is our r of t, and if I want to draw r of t minus 2, ये क्या लिखेला है भाई? minus 2. उल्टा ले चलो +2. So what will happen, sir? This the ramp signal now will be shifted to +2. Are you able to see the shift, sir? How you shifted? Now this has shifted to over here, this point. Okay. Fine, that we have seen over here. R of t minus 2. Okay. Second case, sir. Second case. Again, this is a signal. And now if I say like I want to make it move towards R of t plus 4, what will happen, sir? T plus 4. What will happen now? What will happen? R of t plus 4. ये क्या लिखेला यहाँ पे? +4. क्या करने का? उल्टा. +4 आया तो क्या करने का? -4. अपना शॉर्टकट याद रखिए सर. -4. Now what will happen, sir? This signal now will start from -4. This signal will now start from -4. Is it clear to you, sir, what I have done? Is it clear, sir, what we are trying to do here? Fine. This we are talking about the shifting operation. If I talk about, like I want you to perform now R of 2t. What is the meaning of R of 2t? What's the meaning of R of 2t? Can you help me out? What is going to happen in case of R of 2t? What will happen? Expansion along horizontal axis. Okay, try करिए sir, try करिए. Sorry, compression. Okay, so exactly. तो you have rightly pronounced बेटा. कि like अगर यहाँ पे greater than 1 है, तो greater than 1 का मतलब क्या होता है? Greater than 1 मतलब time compression. So let's see, sir, what is going to happen in this case. Very interesting. Very interesting. Let's see what is going to happen. Now, what is basically R of t, sir? What is R of t? What is R of t? The R of t is actually t times u of t. It is t times u of t. Fine. R of t is nothing but t times u of t. Do you agree to this? Yes, sir. We agree to this. Now I have mentioned, okay, like example, if I write R of alpha. Example, t is alpha. Alpha मतलब t, alpha can be 2, alpha can be 0.5, alpha times t. तो यहाँ पे मैंने t डाल दिया. Okay. तो बेसिकली मेरे पास ये एक्सप्रेशन था u of t करके, u of t. Now since I have introduced alpha as a coefficient, now what will happen, sir? Wherever there is a t, I need to put alpha. Fine, as a coefficient, alpha into t, u of alpha t. So now you tell me what is the meaning of u of alpha t? What's the meaning of u of alpha t? What is the meaning of u of alpha t? What will happen? U of alpha t क्या करेगा? What will u of alpha t will do? Can you help me out, sir? अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ u of 2t, what will happen? Do you think anything will happen? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Exactly, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा because it is continuous in nature. अगर मैं कहता हूँ भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके. अब सर यहाँ पे 2 है, तो चल भाई 2 है, मल्टीप्लिकेशन में उल्टा ले 1/2, 2/2. क्या कर रहे हो सर? बेसिकली इट इज अ इनफाइनाइट सिग्नल. इट्स अ इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल. देयर इज नो लाइक यहाँ पे एंड नहीं है. तो अगर उसको आपने कंप्रेस भी कर दिया, लाइक इन्फिनिटी को आपने डिवाइड किया 2 से, अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने इन्फिनिटी को डिवाइड किया 2 से, तो क्या फर्क पड़ता है? सिंपल एग्जांपल, एक समंदर है, समंदर में से अगर आपने एक बकेट पानी निकाल दिया तो समंदर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज लाइक ओके, इट्स लाइक पीनट्स. व्हाई आर यू रिमूविंग? इट इज लाइक नो वे, कुछ नहीं होगा उससे. Fine. So u of alpha t is nothing, it is not going to help me in this case. So I can simply write over here, it will be only alpha t only, and u of alpha t is as good as u of t. But what is alpha t, sir? Now, what is alpha t? What is alpha t? What is alpha t? Just try to relate. R of t हो गया. What is alpha t? What is alpha t? ये देखिए सर, alpha is nothing but slope. Alpha is nothing but slope. Your alpha is giving you intuition of a slope. Yes or no, sir? तो अल्फा अगर मैं कहता हूं r of 2t, तो बेसिकली सर व्हाट यू आर डूइंग, you are changing the slope of your ramp signal from 1 to alpha. So your slope will change, sir. So kindly make a note of this in a notebook. Kindly make a note of this. R of alpha t
will change the slope of ramp signal. It will change the slope. अगर 2 होगा तो फॉर एग्जांपल समझो अगर आपका सिग्नल अगर ऐसे था तो योर न्यू सिग्नल विल बी ऑफ दिस काइंड. अरे एक सेकंड ना, हम लोग क्या करें सर, दिस विल नॉट कम ना बिकॉज इट इज अ यूनिट रैम्प सिग्नल की बात चल रही है. यूनिट रैम्प के अंदर वन साइडेड होता है. ओके अगर ये आपका सिग्नल अगर है तो आपका नया सिग्नल जो है वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा. लाइक ये है स्लोप 1 और ये है स्लोप 2 बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग. हियर द स्लोप इज 0, हियर द स्लोप इज इंफिनिटी. अभी देखा हम लोगों ने tan 90 इज 0, सिर्फ tan थीटा ना, सिर्फ tan थीटा, तो tan 0 is 0, tan 0 is 0 and tan 90 is infinitive. Tan 0 is 0, tan 90 is infinitive. As I increase the slope, as I increase the angle, the slope will increase. Okay, the one is ऐसा हो जाएगा. Okay, fine. Sir, another question. So if I say r of minus 2t, what will happen, sir? R of minus 2t क्या होगा? Can you tell me fast now from this understanding? What will happen? रिवर्सल होगा along y axis, टाइम Exactly. रिवर्सल. मतलब आपका जो वेवफॉर्म जो ऐसा बनने वाला है. Yes or no? Do you agree? ओम, तनिष्क? Yes, sir. Okay, understood? Okay, fine. That what we have seen in case of over here. So kindly make a note of this, sir. फटाफट देखिए पेज नंबर 27 के ऊपर. R of t minus 2, R of t plus 8, 2r t plus 2. Okay, the slope is 2. 2 कर दिया पे मैंने. Fine, 2 times multiplication by constant y x operation. तो slope equal to 2. फिर टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, सेम एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, तो स्लोप अल्फा हो जाएगा और r ऑफ माइनस अल्फा टी अगर मैं लेता हूं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा. ओके, अब सुनिए सर, रैंप फंक्शन क्यों यूज होता है? रैंप फंक्शन कहां यूज होता है? सर क्या बोला था आपने? कैन यू सर रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन सर? व्हेन व्हाई डू वी स्टडी एलिमेंट्री सिग्नल? व्हाई डू यू स्टडी एलिमेंट्री सिग्नल? कैन यू रिपीट सर? व्हाई So डू to स्टडी derive complex functions. टू डिराइव Complex function. बस खत्म हो गया. आज वही करना है, आज वही करना है सर. टू डिराइव कॉम्प्लेक्स फंक्शन. स्टार्ट. जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर. दिस इज द सिग्नल रेड इन फ्रंट ऑफ यू. ये है आपको दिया हुआ सिग्नल. चल भाई सिग्नल थोड़ा सामने आ जा. ये सिग्नल आपके सामने है. अब ये सिग्नल को मुझे मैटलैब पर बनाना है. ये सिग्नल को मुझे मैटलैब पर बनाना है. मतलब मुझे ये बताना है कि ये सिग्नल जो है कैसे बनता है. सर कैन यू टेल मी सर व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम 0 to 4? व्हाट इज दिस? कौन सा सिग्नल है? रैम्प. रैम्प. Unit ramp. हाँ ठीक है, यूनिट रैम्प. यूनिट रैम्प बेसिकली मैं यूनिट बाद में बोलूंगा सर, मैं यूनिट बाद में बोलूंगा, पहले मैं इसको बोलूंगा रैम्प. आई टेल व्हाई आई एम मेकिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट सर. ओके, मैं इसको बोलता हूं सर ये है रैम्प. ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्टेप. व्हाट इज दिस? स्टेप. फैंटास्टिक. ये भी स्टेप है सर. ओके, मतलब मुझे समझ गया कि सर ये रैम्प है, ये स्टेप है, ये स्टेप है. समझ रहे हैं सर क्या चल रहा है हम लोग? आप फ्लो को समझिए. पहले हमने एलिमेंट्री सिग्नल को समझा. फाइन. अभी हम लोग एलिमेंट्री सिग्नल को यूज करके हायर ऑर्डर सिग्नल्स, जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल, उसको हमने समझने की कोशिश की क्या हो रहा है यहाँ पे. नाउ अब आते हैं कि सर रैम्प कौन सा है? यूनिट रैम्प है कि नॉर्मल रैम्प है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्प? सर आप बोलते हो रैम्प होता है r ऑफ t इज इक्वल टू t टाइम्स u ऑफ t. ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट m ओवर हियर. तो मेरा काम अभी कि m कितना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? तो m इज अ स्लोप. हाउ डू यू फाइंड स्लोप? तो स्लोप के लिए आपको मैंने यहाँ पे बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि स्लोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला एज y2 minus y1 upon x2 minus x1. So can you tell me sir what is slope of this? What is slope of this? What is the slope? 1. How do you come to know 1? What is y2 minus y1? 4/4. 4 minus 0. What is x2 minus x1? Again 4 minus 0. So 4 minus 0 upon 4 minus 0 comes out to be 1. And hence, as you have mentioned rightly, this is now a unit ramp function, because over here the m value is 1. Because over here the m value is 1. Understood sir? Okay. अभी रैम्प फंक्शन जो है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे आके खत्म हो जाता है. मतलब यहां पे जो है वो स्लोप चेंज हो रहा है. स्लोप चेंज हुआ है. तो यहां तक स्लोप कितना था सर? व्हाट वाज स्लोप ओवर हियर? What was slope from this point to this point? कितना स्लोप था? The slope was 1. Okay. इसके बाद में स्लोप कितना है? After 4, what is the slope? What is the slope? 0. फाइन. आपको बताया था मैंने, अगर सपोज ये ऐसी लाइन है तो स्लोप 0 होता है, और ऐसी खड़ी लाइन अगर होती है तो tan 90 इंफिनिटी होता है. तो स्लोप विल बी इंफिनिटी. So this is the same like this, parallel to x axis. So I can say the slope at this case is 0.
So we have understood particular portion. Okay, now तो मैं क्या करूंगा सुनिधा से यहाँ पे आप now you see पहले हम लोग जरा थोड़ा प्रॉपर मेथड देखते हैं, बाद में शॉर्टकट पे बाद में हम लोग आएंगे, तो दैट विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द शॉर्टकट, सो दैट द शॉर्टकट कैन बी एप्रिशिएटेड, पहले आप देखिए सर यहाँ पे मैंने क्या किया है, समझिए सर धीरे धीरे। ये 0 है, ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मुझे दिखता है रैंप, तो मैंने लिखा आर ऑफ टी। क्यों आर ऑफ टी लिखा? बिकॉज स्लोप यहाँ पे 1 है। अगर स्लोप कुछ और होता तो मुझे आर ऑफ दैट 2t 3t मुझे ऐसा लिखना पड़ता टू इंडिकेट दैट स्लोप। फाइन, हमने अभी देखा, हम लोगों ने स्केलिंग से आपको स्लोप मिलता है, ठीक है, चलो यहां तक समझ गया। एट एग्जैक्टली t इक्वल टू 4 व्हाट इज हैपनिंग? एट t इक्वल टू 4 स्लोप इज गोइंग टू चेंज। व्हाट इज हैपनिंग मतलब जो रैम जो चल रहा था, जो रैम जो आगे बढ़ रहा था, वो रैम को आपको नलीफाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा आपको? मैंने आपको कहा था, डू यू रिमेंबर? हाँ, नेगेटिव, हाँ, आपको माइनस आर ऑफ टी करना पड़ेगा। माइनस आर ऑफ टी क्या करेगा? माइनस आर ऑफ टी का मतलब ये होता है कि यू विल गेट समथिंग ऑफ दिस काइंड। फाइन, तो ये ऊपर जा रहा है, ये इसको नीचे खींच रहा है, तो डोंट यू थिंक दिस विल नलीफाई ईच अदर? मतलब यहाँ पे सब एग्जांपल पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर ये 4 था तो ये 4 विल ट्राई टू नलीफाई 5, 5 minus 5 0, 4 minus 4 0, ओके। तो व्हाट विल हैपन? आई विल गेट सच काइंड ऑफ थिंग। फाइन, नाउ यहाँ पे नलीफाई हो गया। नाउ अभी सर कहां पर हो रहा है एग्जैक्टली, किधर हो रहा है? एट t इक्वल टू +4। ये उल्टा लिख -4। समझा आपको क्या क्या यहाँ पे मैंने? ओके, नाउ अब ये गाड़ी यहां तक चलती रही, ठीक है। अब ये पॉइंट पे क्या हुआ? ये पॉइंट पे जंप हो गया। जंप मतलब स्टेप होने वाला है। कहां पे जाना है मुझे? 4 से 8 पर जाना है। 4 to 8 व्हाट शुड बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेप सिग्नल? स्टेप सिग्नल जो होता है u ऑफ t, उसका एम्पलीट्यूड तो 1 होता है, हमने देखा था, इट इज यूनिट स्टेप, एम्पलीट्यूड इज 1, u ऑफ t इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं कहता हूं 4 टाइम्स u ऑफ t, 4 टाइम्स u ऑफ t, तो डोंट यू थिंक इट विल बिकम 4? देन इट विल बिकम 4। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं 4 u ऑफ t। कहां पर हुआ है सर ये? एट t इक्वल टू +6। ए उल्टा ले रे, -6। समझा आपको? अब ये पॉइंट पे चलता रहेगा, स्टोरी टक 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 चलता रहा यहाँ पे। ये पॉइंट पे आने का अभी क्या होगा सर? नाउ व्हाट विल हैपन सर? एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन? नाउ दिस विल गो व्हाट? अभी इसको मुझे नीचे लेकर आना है। कितना नीचे? मुझे नीचे, इसको नीचे जंप करना है फ्रॉम 8 to 0। आई नीड टू पुट हियर -8, बिकॉज वो ऊपर था, ऊपर से नीचे, तो -8 लाना पड़ेगा। जब क्लाइंपिंग करते हैं ना, -8 पे लेकर आए। कहां पर हो रहा है? एट t इक्वल टू +8। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? t -8 उल्टा। अंडरस्टूड और नॉट सर? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, चलो अब देखिए सर, शॉर्टकट दिखा देता हूं आपको मैं। अब आता है शॉर्टकट। 0 4 6 8, 0 उल्टा, -4 -6 -8। वेरिफिकेशन, शॉर्टकट वेरिफिकेशन भाई, प्रॉपर वहां के नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रैंप ऊपर, यहाँ पे रैंप, यहाँ पे क्या था? जंप। यहाँ पे क्या था? जंप, इसलिए यू और यू। अंडरस्टूड सर? अंडरस्टूड और नॉट? ओके, चलो अगर समझा है तो भी आप मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। ट्राई ऑन योर ओन, ट्राई ऑन योर ओन। -4 0 8 12, -4 0 8 12। हम लोग उल्टा लेने वाले हैं। +4 0 -8 -12। हाइट इज 4। ramp is gone, then again ramp. How to write it? चलो स्टार्ट वर्किंग, बोलिए सर। स्टार्ट वर्किंग। सर ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना ये? हाँ, so what? अच्छा, It is starting from -4। तो पहले r of t +4 आएगा, ओके, एंड देन उसको नलीफाई करने के लिए -r of t, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देन ये जो 12 से वो -r of t -12 चाहिए रहेगा उसके लिए। बराबर है। चेक करो, बराबर मैच हो गया आपका। काइंडली चेक इट वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। यस सर। यस सर, वेरीफाई करना है। हाँ जी, वेरीफाई करना है। रैंप नलीफाई,
रैम्प रैम्प मुझे रैम्प रैम्प, लगता है ओके। टी एक सेकंड ना, सी -4 +4, 0 का 0, 8 का -8, 12 का -12, 4 0 -8 -8, परफेक्ट है, मैच हो गया, शॉर्टकट से वेरीफाई हो गया। एनी क्वेश्चन ओवर हियर, एनी स्टूडेंट इज हैविंग? तनिष्क ने बोला ना अभी, तनिष्क ने तो बोला सर एलिमेंट्री सिग्नल्स आर यूज्ड टू डिराइव हायर ऑर्डर सिग्नल्स, ओके। इफ यू हैव अंडरस्टूड, नाउ आई वांट यू टू ट्राई द अनदर क्वेश्चन ऑन योर ओन। अभी अनदर क्वेश्चन उल्टा है भाई, उल्टा है, देखिए क्या बोलता है। r of t -2 times r of t -2 plus r of t -3, solve this question, you have to plot now। पहले आपको प्लॉट दिया होता था और बोला जाता था कि नाउ यू राइट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल, अभी आपको प्लॉट करने बोला हुआ है, कैसे होगा? जंप देखिए सर, कहां कहां है आपका स्लोप, कहां का चेंज हो रहा है, आई मीन कौन सा पॉइंट से वो 0 है, t -2 तो +2 लिखने का, यहाँ पे -3 +4, 0 2 4, हाँ r of t, चल भैया r of t, ओके। देन -2, -2 क्या होगा, -2 बोलिए सर, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ -2? नीचे आएगा सर। हाँ नीचे आएगा, हाँ देन व्हाट विल हैपन, -3 है तो -3, तो इसलिए +3 होगा, काइंडली मेक अ नोट, -3 +3, दिस विल बिकम +3, हाँ यस, चेक करो मैच हुआ आपका। ऊपर की तरफ -2 करने से क्या हुआ, नलीफाई कर दिया, फिर वापस फटक वही पॉइंट से नीचे आना है मुझे, वो पॉइंट से नीचे आ गया, वो नीचे आने का विल गो अगेन डाउन, तो आई डोंट वांट टू गो इट डाउन, आई वांटेड टू गो इन स्ट्रेट लाइन, जिससे मैंने भी प्लस कर दिया, तो 1 -2 +1, 1 -2 is -1, -1 + 1 is 0, slope is 0, verified। 1 -2 is -1, -1 + 1 is 0, the ultimate slope is 0। Understood what we did? Come on, now try for this, sir. Try for this. चेक करो मैच हो रहा है क्या आपका। क्या करना है सर यहां पर, मुझे कैसे करना है, यहां पे क्या हो रहा है, r of t, सी r of t, यहां पर है r of t, ये r of t था, व्हाट इज द स्लोप, 4 - 0, 4 - स्लोप इज 1, r of t, ओके। माइनस r टाइम्स t -4, मतलब यहां पे मुझे स्लोप को नलीफाई करना है, -1 है ना, यहाँ पे माइनस दिया है, स्लोप नलीफाई हो जाएगा, स्लोप नलीफाई हो गया, नलीफाई होने के बाद में आई वांटेड टू गो बैक टू 0, हाउ टू मेक इट बैक टू 0, तो आई विल डू व्हाट, ये 4 था तो -4 करेंगे, वेयर एट t = 4, तो एट 0 4 and 4, फाइन, 0 4 and 4, तो 4 पे ये दो चेंज होता है, रैम भी नलीफाई करना है मुझे, और ये इसको मुझे इसको नीचे करना है, फाइन। Understood or not, sir? Understood. Om, Tanish, Yes sir। any question over here? सर नहीं समझ रहा है, डिफिकल्ट है? It's all about logic. It's all about logic. If you practice, the things will be easy and understandable to you. चलो, last chance. Try for this. ये वाला करिए, ये वाला ट्राई करिए। Don't look at the solution directly. Is a solution, I deliberately keep the solution in front of you. But I want to try first on this on your own. Then you verify whether it is answer is matching or not. सेम चीज हम मैटलैब पे कर सकते हैं। मैटलैब पे मुझे ये लिखना पड़ेगा और लिखने का फिर मैं प्लॉट करूंगा तो आई बी ऑब्जर्विंग दिस वेवफॉर्म कि हाँ मस्त आ रहा है यहाँ पे। कम ऑन फास्ट ट्राई करिए। सी व्हाट इज देयर फर्स्ट, 0 2 6 8, तो 0 -2 -6 -8, 0 -2 -6 -8, फाइन। वेरिफिकेशन करके दिखा रहा हूं आपको मैं। नाउ स्टार्ट। What I want first, sir? What I want first? I want a jump from 0 to 2. I put here as 2 u of t.
okay, to u of t at t equal to 0. And exactly at t equal to 0, I want a ramp because it is going in the like slope fashion. What is the slope? 2 minus 0, 2, 4 minus 2, 2. So 2 upon 2, 1. Okay, r of t. At this point, what is going to happen at this point? At this point, I need to drag it down. ये नीचे की तरफ आने वाला है, ऐसा नीचे की तरफ आएगा। इसको नीचे की तरफ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? u t minus 2 करना पड़ेगा और रैम्प भी नलीफाई होगा। So that is the reason I put here as minus r t minus 2 to nullify that ramp. And I again need to do what? I want to put it down. तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 2 u of t minus 4 से 2 पे लेकर आना है मुझे। अगर ये स्टेप अगर मैं नहीं लिखता तो वो 4 की तरफ ही होता है स्ट्रेट लाइन। I wanted to go back ना, see just try to understand this। जब मैंने ये लिखा स्टेप, ये वाला, जब हम लोगों ने ये वाला स्टेप लिखा तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ यहां आ जाएगा ये, कि इसको नीचे भी लाना है आपको। तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस 2, वाई माइनस 2? बिकॉज 4 से 2, तो माइनस 2 u ऑफ t माइनस 2। अब ये यहां पर आ गए। फिर अभी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट 6? एट 6 यू हैव टू मेक इट गो लाइक दिस। तो अगेन इट टू राइट माइनस, so it go like this, minus rt minus 6 at this point। अब यहां पे क्या करोगे? It will make 0, it will put here like r of t minus 8। Understood or not, sir? What is happening? एक Yes. स्टूडेंट ने Yes. कहा था सर कैन यू टेक एग्जांपल। तो देखिए सर, आई एम टेकिंग सो मेनी एग्जांपल्स फॉर यू सो दैट थिंग्स बिकम्स इजी एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो नाउ यू ट्राई दिस मास्टरपीस क्वेश्चन, बाहुबली वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आपको करने अगर आ गया, this means you have understood the entire logic। come on, try to solve on your own, try to figure out what is happening, sir। everyone should try, huh? Now see, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ए उल्टा ले रहे। ओके, 0, -2, -4, -6, -8 है ना, -10, -12, -14। verification is done। now what I want, sir, I want first is what is the ramp? What is the slope of the ramp? 2 minus 0 is 2, 2 minus 0 is 2, 2 upon 2 is 1, slope is 1। done। at this point what should happen? The slope should nullify। so what I'll be writing over there? minus of rt minus 2। स्लोप नलीफाई हो गया। क्या उसको नीचे ऊपर किधर लेके जाना है? नहीं। अगर नीचे ऊपर लेके जाना होता तो क्या लिखना पड़ता? ut minus 2 लिखना पड़ता। तो दिस इज यूज फॉर क्लाइंबिंग पर्पस, लाइक गोइंग फॉर अप एंड डाउन, नॉट रिक्वायर्ड। उधर ही खाली स्लोप नलीफाई करके रखना है। ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये पॉइंट पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो पहले आपका स्लोप 1 था, यहाँ पे आपने 0, फिर आपको 1 करना है यहाँ पे। तो आई रिक्वायर व्हाट? एट r t minus 4 पे मुझे यहाँ पे rt minus 4 मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे। समझा आपको? ओके, अभी फिर से मुझे स्लोप को नलीफाई करना है। हाउ टू नलीफाई द स्लोप? आई नीड टू पुट अगेन व्हाट? r ऑफ t minus 6, माइनस साइन। ओके, स्लोप नलीफाई हो गया आपका, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट पर आने के बाद में आपको जंप करना है। कहां से जंप करना है? आपको 4 से डायरेक्टली -2 पर आना है सर। ओके, कैसे हो गया? मतलब यू हैव टू जंप फ्रॉम 4 टू माइनस, मतलब 6 का ड्रॉप है, -6 का ड्रॉप, तो -6 बिकॉज गोइंग डाउन। डाउन रहा तो -6, अगर अप रहा तो प्लस, है ना। यहाँ पे आपने डाउन किया इसलिए आपने माइनस लिखा था यहाँ पे। ओके, तो आपने इसको माइनस कर दिया यहाँ पर। अंडरस्टूड सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, एट -8। फिर क्या करने वाले यहाँ पे? अगेन यू वांट व्हाट? अगेन यू वांट अ स्लोप। कौन सा स्लोप है सर? यहाँ पे माइनस वाला, ये -1 वाला स्लोप है ना, बिकॉज दिस इज +1, ये +1 का स्लोप है, माइनस है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? माइनस ऑफ r t minus 8। व्हाट इज स्लोप यू वांट? व्हाट इज स्लोप? सो स्लोप इज -4 -2, 2, 10 by 8, 2, अगेन 2 का स्लोप। फाइन, अगेन now what you want? You want to nullify the slope। how to nullify? you need to plus, because -1 था यहाँ पे, the original slope was -1। what next slope you want is +1। तो how to nullify? -1 + 1 0 हो जाएगा। ये आपको नया स्लोप 0 चाहिए ना, तो +1 करोगे तो 0 होगा वो, है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? प्लस ऑफ t minus 10। now again you want slope of +1। ओके, तो आपको ओरिजिनल स्लोप क्या था आपका? ओरिजिनल स्लोप वाज ऑफ 0, तो 0 से +1 करोगे तो कैसा करेगा आप? r ऑफ t minus 12। फाइन, देन यहाँ पे फिर क्या करोगे आप? यू वांट अगेन स्लोप टू बिकम लाइक दिस। फाइन, सब क्या करोगे यहाँ पे? माइनस ऑफ r t minus 14, so it will go over here। सी यहाँ पे आपको स्लोप को आपको नलीफाई करना है, एंड देन अगेन यू वांट अ जंप फ्रॉम -2 टू 0, तो you put here as plus t2 minus 14।
Have you understood or not, sir? Masterpiece question. Yes, sir, understood. Is there anyone who is still not following कि क्या चल रहा है ये तनिष्क का वर्डिंग से सर एलिमेंट्री सिग्नल्स आर यूज्ड टू डिराइव हायर ऑर्डर सिग्नल्स कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को डिराइव करने के लिए सिग्नल यूज किया गया है समझा यहाँ पे डेल्टा का काम कुछ भी नहीं है बिकॉज डेल्टा इज इम्पल्स सर वो क्या करेगा बेचारा आके वहां पे वो तो 1 0 पे आके खत्म हो जाता है वो यहाँ पे स्टेप और रैम को यूज करने वाला हूँ चलो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द हैपनिंग इन दिस केस वेरी गुड बेटा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो हमने देखा था हम लोगों ने यहाँ पे कि लाइक हाउ डू यू राइट है ना लाइक 12509 फाइन सो दिस विल now we come to this step signal impulse ramp exponential तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूं सर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जैक्टली हमने क्या क्या सिग्नल्स देखा एंड व्हाट सिग्नल यू शुड नो and anyways I have shared this thing with you in the form of journal in the form of manual I mean to say lab manual आपको साथ में शेयर किया है मैंने तो आप lab manual के अंदर आप ये देख सकते हो this is what the elementary signals that we can study एक होता है impulse step ramp है ना ये चीज हमने देखा यहाँ पे exponential sine function square sawtooth triangular okay sync function looks like this sync function signum function भी देखा हम लोगों ने like it is 1 for greater than 0 and it is -1 for less than 0 any doubt over here sir have you understood the elementary signals any question Yes. Yes, sir. okay chalo so we have seen these three signals other signals is like you can understand it because see यहाँ पे आप देख सकते हो चलिए दिस आगे के दिन जो signals जो है like sine है या square it is self understandable so I won't be explaining all this because it is self understanding and anyways like you can come over here and check it out you can come over here and check it out take a second I'll showcase it to you and one more presentation to you one more thing you can see standard elementary signals see अपने लिए थर्ड कॉलम है डीएसपी जब पढ़ोगे तब आप सेकंड सिग्नल को देख सकते हो इम्पल्स डेल्टा n1 upon delta t it is delta t kindly make a correction the delta t is 1 for t equal to 0 and it is 0 for t not equal to 0 that what we have seen was about the continuous time delta function and impulse function unit step आपके सामने है for t greater than 0 again a small mistake over here so what is the mistake can you help me out what is the mistake in this case क्या क्या इसने यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे एग्जैक्टली तो यहाँ पे ही इज नॉट कंसीडरिंग गिब्स फिनोमिनन यहाँ पे इसने गिब्स फिनोमिनन को इसने इग्नोर किया है so if you are not considering Gibbs phenomenon then you have to go with this if you are not considering Gibbs phenomenon then you may go for this if you are considering Gibbs phenomenon then you have to take t greater than 0 and you have to write for t equal to 0 the value is 0.5 this for Gibbs phenomenon यहाँ पे Gibbs phenomenon कंसीडर नहीं किया गया है तो sometime दे द क्वेश्चन दे एग्जामिनर आपको बोलेगा ignore Gibbs phenomenon consider Gibbs phenomenon is not available without taking Gibbs phenomenon into consideration well what is the meaning of this without taking Gibbs phenomenon into consideration क्या मतलब होता है इसका without taking Gibbs phenomenon into consideration what is the meaning of this yes sir fast मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 मतलब आपको t इक्वल टू 0 पे 0.5 नहीं लेना है गिब्स फिनोमेनन अगर मैं कंसीडर नहीं करता हूं तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या होगी 1 होगी at t equal to 0 the value will be 1 if I'm not considering Gibbs phenomenon if I'm considering Gibbs phenomenon then at t equal to 0 the value will be 0.5 समझ गया सर काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोट गिब्स फिनोमेनन लेते हो
तो वैल्यू क्या होगी t इक्वल टू 0 पर? फास्ट टेल मी व्हाट विल द वैल्यू t इक्वल टू 0 इफ आई कंसीडर द फेनोमेनन? 0.5. अगर एग्जामिनर बोलता है डू नॉट कंसीडर गिब्स फेनोमेनन, व्हाट विल द वैल्यू t इक्वल टू 0? 1. Yes, so this is the step signal created for Gibbs phenomenon not taken into consideration. रैंप सिग्नल ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने. R of t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे गिब्स की बात नहीं करने का इधर, बिकॉज देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी हैपनिंग. फाइन, बिकॉज हम लोगों ने e of t से मल्टीप्लाई किया है. इक्वल टू 0 for t लेस देन 0. साइनोसॉइडल देखिए यहाँ पे. फाइन, साइन वेव. Fine, x of t equal to sin t. Sin x of t equal to a sin omega t, where a is 1, the a is the amplitude, and sin omega. Omega is what, sir? Omega is the angular frequency. Okay, 2 pi upon capital T. What is the formula for omega? Can you tell me, sir? What is the formula for omega? What is the formula for omega in this case? What is omega? Omega is angular frequency given by omega equal to 2 pi upon capital T. कहां पढ़ा था ये हम लोगों ने? वी हैव स्टडीड इन 12th फिजिक्स 1 चैप्टर 1 सर्कुलर मोशन. यस सर, करेक्ट है. तो काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस. ए साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिनोटेड इन रेडियन पर सेकेंड, वेयर एज linear frequency is denoted by cycles per second, cycle per second or hertz, cycle per second or hertz. Okay, that was about sinusoidal waveform. Then we will be discussing about exponential. The exponential looks like this: exponential rise, exponential decay, है ना? Fine. If a is greater than 1, 2 raised to 1, 2, 2 का square 4, 2 का cube 8, so on. If I talk about a is less than 1, then what will happen? Like 0.5 है, तो 0.5 raised to 0, 1. 0.5 raised to 1, 1 upon 2. 0.5 raised to 2, 1 by 4, 0.2, and so on. So don't you think it will go on decaying? This is growing exponential. This is like decay exponential. Fine. Okay. What about this? If the exponential is like less than -1, मतलब अगर नेगेटिव रहा तो मुझे मॉड लेना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे से डबल एक्सपोनेंशियल देखने को मिलेगा. यहाँ पे I will get to see double exponential, double-sided exponential, because if I take modulus sign. Any question, any doubt over here in this case? Any question about elementary signal? Understood, sir? ओके, तो आपका जो सिलेबस है, जो इसकी बात करता है अबाउट योर एलिमेंट्री सिग्नल कंप्लीट्स ओवर हियर. सर, व्हाट इज द रेक्टेंगुलर पल्स? व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर पल्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स? रेक्टेंगुलर पल्स आप लिख लीजिए सर अपनी नोटबुक में. रेक्टेंगुलर पल्स आई विल राइट ओवर हियर सो इट बिकम मोर इजी, बिकॉज ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स. Rectangular pulse. This is also one of the elementary signal. Rectangular pulse look like this. For example, this is my x-axis, obviously time axis, and this is my y-axis. X of t बोलिए, random signal x of t. So rectangular pulse will look like this. Rectangular pulse will look like this. कैसे दिखेगा rectangular pulse? It will look like minus tau by 2, 2 plus tau by 2. What is the width of this? What is the width of this? What is the width? If starting point is tau by 2, ending point is tau by 2, then what is the width of this rectangular pulse? Tau. Exactly. The width will be tau. Fine. Okay. Now, don't you think this rectangular pulse look like a gate where you enter the gate? Hence, rectangular pulse sometimes also known as gate function. It may come in the elementary, like you may kindly make a note of this. The rectangular pulse is known as this is rectangular pulse, and it is symmetric in nature. Why it is symmetric? मतलब जितना पैन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है tau by 2 का, उतने सेम पैन आपको यहाँ देखने को मिलेगा tau by 2 का. It is like symmetric along y axis. Hence, it is known as rectangular pulse. Okay.
Fine. Why it is not rectangle? Because it look like a rectangle. Like you have length, you have height. Okay, and height depends. Like 2 hai, 3 hai, 5 hai. The examiner will give you. Fine. Okay, this is what we call it as rectangular pulse. So this also is one of the thing that is mentioned over here. Let's come again to syllabus, sir. Let's come to syllabus. Kindly read this line, sir. Elementary signals such as एक्सपोनेंशियल अभी देखा हम लोगों ने, साइन, स्टेप, इंपल्स, रैम्प, रेक्टेंगुलर पल्स अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ये देखिए ट्रायंगुलर, इस ट्रायंगुलर. You will do it more in more detail. Don't worry, sir. You will do it in more detail when during the lab session. लैब सेशन में पूरा और डिटेल में डिस्कशन होगा. तो डोंट बी थिंक लाइक अरे क्या से फटाफट खत्म करो चीजों को, तब और डिस्कस करेंगे हम लोग इसको. And triangular that we have seen, these all are known as elementary signal. In lab session we will discuss on this part as well. We will discuss on this part as well, like the way we were talking about this. ये भी चीजों का डिस्कशन होने वाला है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइक हाउ टू जनरेट. ये भी हम लोग जनरेट करके देखेंगे वहां पे कैसे दिखता है. फाइन, डोंट वरी अबाउट सर, प्रैक्टिकली चीजें आपको मैं बताने वाला हूं. दिस व्हाट वी हैव डन सो फार. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? Yes, yes, sir. Anything you want to ask? क्या बोला श्रुति रहमान? अभी तक डाउट नहीं है. Okay, चलो, very good. Fine. Wherever there is a doubt, please ask and clear it there itself. Don't keep your doubt pending. Okay, now we come to classification of signals. Now we will be dealing with classification of signals. That will be the second topic of our. Okay, we will be dealing with classification of signal. है syllabus में? Yes, it is there in syllabus. I can show you. Continuous signal, deterministic, non-deterministic, ये तब हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने. What is continuous signal? Continuous signal, those signals which are available at every instant of time. What do you mean by deterministic signal? What is the meaning of deterministic? Deterministic signal वो होता है जो यहाँ पे हमने देखा था. I'll just show it to you. ये भी हमने डिस्कस किया है, if you remember. Can you help me, sir? What is the deterministic signal? 36 से I'll come to page number 2 पे आते हैं हम लोग. यहाँ पे page number 1, sorry, page number 1. See, deterministic signal, random signal. Deterministic signal are those signal that can be represented in the mathematical or graphical format. Like example, अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, for example, if I say like v is equal to sine of omega t. So now you can tell me, sir, what will happen? So what will the value of this waveform at omega t equal to 90 degree? What will happen? 1. हाँ, मतलब आप डिटरमाइन कर पा रहे हो कि क्या वैल्यू होगा. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो डू यू नो व्हाट सॉन्ग आई एम गोइंग टू सिंग? व्हाट विल बी द वेव फॉर्म विल बी जनरेटेड? नो आइडिया सर, नो आइडिया. फाइन, तो आई कैन नॉट डिटरमाइन. दैट इज नॉन एज नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल. द सिग्नल टू हुप विच आई कांट डिटरमाइन. हाँ, इतना मालूम है कि भाई गाना गाने वाला है, और गाना गाने के बाद में जो सॉन्ग जो जनरेट होगा दैट विल बी एन ऑडियो सिग्नल. पर वो ऑडियो सिग्नल क्या होगा, कैसे दिखेगा, दैट आई डोंट नो. आई कांट डिटरमाइन इन एडवांस, एज यू राइटली मेंशन. दैट इज नोन एज नॉन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम सिग्नल? रैंडम सिग्नल आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी की तरफ बोल सकते हो कि इट मे रेन टुमारो. the stocks of Tata Consulting Services, TCS का जो स्टॉक है वो कल शायद ड्रॉप होगा, वो कल रिलायंस का शायद से इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं आप. ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है. एज पर द डेटा दैट आई रिसीव्ड, इट सीम्स टू दैट मे हैपन. कोविड में एंड बाय 2022. दैट व्हाट वी कॉल इट एज रैंडम. यहाँ पे आप डिटरमाइन कर पाते हो बाय मींस ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक. I hope the things are clear to what's the meaning of deterministic, non-deterministic, and random signal. Next, what we have dealt with was the continuous time and discrete time signal. See, one channel teacher देखा था हम लोगों ने, the dimensional देखा था हम लोगों ने. Then we talked about continuous and discrete. तो continuous signal ये होता है जहाँ पे आपको हर पॉइंट पे सिग्नल देखने को मिलता है. मतलब अगर मैं वो पॉइंट पे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं तो स्लोप एग्जिस्ट करेगा.
लेकिन यहाँ पे आपको स्लोप एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे दिस इज अ प्योरली अ discrete time signal because there is no signal, no sample is available in between these 2 points. No sample is available, so you cannot take first order derivative. Okay, you will get a discontinuity. आपको discontinuity देखने को मिलेगा वहां पे. That what we have discussed about this. पेज नंबर 36 पे फिर से आ जाते हैं हम लोग सर. 36 पे आते हैं हम लोग. फाइन. अभी अब अपने को सिलेबस में क्या पढ़ना है वो देखिए आप. वी विल बी डीलिंग विथ, ये तो हो गया, पीरियोडिक, ए पीरियोडिक, periodic, non-periodic, number 1. Okay, energy and power, number 2. energy and power है यहाँ पे. And number 4, what is number 4 sir? Even and odd signal. Number 4, symmetric and asymmetric signal. Causal, anti-causal बाद में देखते हैं हम लोग क्या. Causal, anti-causal will be more clear if we talk about Laplace transformation at that time. Is it clear to you sir what is pending now? So now I will be telling you that now we are left with what is classification of signal 1.2 and most important convolution and correlation. Very, very important. Fine. Is it clear to you, sir? Understood? That's all from my side. We end with the today's session. Happy weekend to all of you. Video will be uploaded today itself. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.